हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रेडिएशन डिटेक्टर के बारे में और रेडिएशन डिटेक्टर कितने टाइप का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए जानते हैं कि रेडिएशन डिटेक्टर होता क्या है, रेडिएशन डिटेक्टर के कितने टाइप होते हैं। रेडिएशन डिटेक्टर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट या दूसरे लैंग्वेज में हम डिवाइस भी कह सकते हैं जो कि डिटेक्ट करता है रेडिएशन को। रेडिएशन मीन्स अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज को डिटेक्ट करने का काम जो डिवाइस करती है उसे हम रेडिएशन डिटेक्टर कहते हैं। और रेडिएशन डिटेक्टर कितने टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप हुआ आपका गैस फील्ड डिटेक्टर, सेकेंड हुआ सेंटिलेटर, थर्ड हुआ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो चलिए नोट्स भी हम लिखवाते हैं कि रेडिएशन डिटेक्टर क्या होता है। फर्स्ट, रेडिएशन डिटेक्टर is an instrument or device used to detect or identify high energy particles like alpha particles, beta particles and gamma radiation. Second point, a radiation detector is a device for measuring nuclear electromagnetic और light radiation. Third point, when talking about radiation detector instrument, there are 3 types of detectors that are most commonly used depending on the specific needs of the device.
ए गैस फील्ड डिटेक्टर। गैस फील्ड डिटेक्टर में आता है अल्फा, बीटा, गामा रेज, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, गैस फील्ड डिटेक्टर अल्फा, बीटा, गामा रेज, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को डिटेक्ट करने का काम करता है। बी सेंटीलेटर। इसमें एब्जॉर्ब द एनर्जी पार्टिकल। सेंटीलेटर काम करता है एनर्जी पार्टिकल को अब्जॉर्ब करने का। सी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। इसमें होता है रेडिएशन को डिटेक्ट करने का काम करता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। अब गैस फील्ड डिटेक्टर, सेंटीलेटर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।